Our lead story tonight, well, the political countdown to 2024 is well and truly on, this time in Parliament. Yesterday it was Rahul Gandhi, but today the Prime Minister tore into Rahul Gandhi and many of the charges he made yesterday in his reply to the motion of thanks to the President's address. The Prime Minister said on the one hand they claim that India is so weak, no one listens to us. On the other hand, they say we've influenced decisions of other countries. He also took a dig at the opposition, saying the Enforcement Directorate has brought the entire opposition together. मैं धन्यवाद के साथ साथ राष्ट्रपति महोदया जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों को मार्गदर्शन किया है। लेकिन मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे। बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत की आर्थिक गौरवगान करे, तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं। भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबकाकर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा।
मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। And many of the remarks made by Congress leader Rahul Gandhi in Parliament yesterday were expunged today. The remarks made by him included that the government had favoured industrialist Gautam Adani. The remarks were expunged according to government sources, or according to the Speaker's office sources, was because they weren't authenticated and that they were made without giving notice. However, Rahul Gandhi, reacting to this today, said that he stands by it, asking why his remarks were expunged, adding that a probe should be ordered into his allegations. Why was my words expunged? In fact, Prime Minister was shell-shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहां कितनी बार मिले हैं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। And both the Lok Sabha and Rajya Sabha today were dominated with charges and counter charges between BJP ministers attacking Rahul Gandhi and the Congress for remarks made without proof, and the Congress responding strongly as well. सर कल राहुल गांधी जब बोलते बोलते 2 बार ये शब्द इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री विदेशों में घूमते हैं। प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो देश के लिए जाता है, वो हनीमून या हॉलिडे मनाने नहीं जाता है। Sir, as we know that the presidential address is drafted by the government, so it is not the president, but government is responsible for the contents of the address. I beg to differ with the tone and tenor enshrined in the presidential address. इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे हिंदुस्तान में ये ढिढोरा पीटा जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने एक आदिवासी को प्रेसिडेंट बना दिया, इसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया। हम आदिवासी को बना दिया, आदिवासी को बना दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया किसी को। ये राष्ट्रपति के बारे में जो है इन्फ्लुएंस कर रहे डिबेट को सर, आदिवासी कह के उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द कह के ये उसका नाम नहीं ले सकते सर। आप मानो या ना मानो, आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन कान खून के सुन लो, राहुल गांधी जी की बात में माननीय सदस्य हिंदुस्तान में चर्चा हुआ। अधीर जी, इस तरह से ये सेंसिटिव मुद्दा है इस सदन में, ये सब जिसका कोई तर्क नहीं है। अच्छा, हम जब कहेंगे सेंसिटिव है, ऐसा बात मत, आप जब कहेंगे इनसेंसिटिव है, यही है ना बात।
आप राहुल गांधी के खिलाफ गाली दोगे, आप राहुल गांधी जी को पाकिस्तान की दलाल बनाओगे, वो सेंसिटिव है, वो इनसेंसिटिव है। और हम जब असली मुद्दे उठाते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। मेरा इनसे निवेदन है कि इतना बता दे कि मैं सिर्फ अखबार के हवाले से कह रहा हूं, ये कोई अधिकृत बात नहीं है। बाद में जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप एक काम कीजिए ना, जवाहरलाल नेहरू को किसी ने बताया था कि सेक्रेट सेशन करो। जवाहरलाल नेहरू जवाब में कहा था कोई सेक्रेट सेशन नहीं होगी, हम खुले आम चर्चा करेंगे। ये हिम्मत अब क्यों नहीं दिखा सकते? नए हिंदुस्तान की बात करता है। नए हिंदुस्तान में अगर सबसे जोखिम में अगर कुछ है, वो है हमारा अधिकार। मीडिया वालों को घुसने नहीं दिया जाता। क्यों आप मीडिया को डरते हैं? Also in Parliament today, a face-off between what the Prime Minister is wearing today. He is wearing actually a jacket made of recycled plastic bottles. And today, a dig by Piyush Goyal, leader of the BJP in the Rajya Sabha, at the Congress President Kharge for wearing what he said was a Louis Vuitton scarf, saying that should we ask for a JPC on who paid for the scarf. जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब लगती है? जब आरोप सिद्ध होते हैं, इनकी तरह खोल के घोटाले होते हैं, 2G का स्कैम होता है, अंतरिक्ष विभाग का स्कैम होता है, या सिक्योरिटीज पे सरकार पे आरोप लगता है, तब बैठती है। ऐसे इनके हिसाब से अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इश्यू में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठने लगे, तो कल तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी तय करे कि जो स्कार्फ पहना हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये लुई विटॉन का स्कार्फ कहाँ से आया, किसने इसके पैसे दिए, कितने का स्कार्फ पहने, इनकी वेल्थ कहाँ से आई? अब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इश्यू नहीं होता। इश्यू पे कोई तत्व दे, कोई आरोप सरकार पे लगाए, कोई बताए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई बताए कोई गलत काम किया, तब इसके बारे में बात करें। आपकी मेहनत आप लोग आपको चाहते थे, हमारे वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए, आप गिनने को फुर्सत नहीं, तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। Actually, leader of the opposition, leader of the opposition has said something significant about me. Leader of the house has missed it. इन्होंने ये कहा है, मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएंगे। इन्होंने जो ताना बाना बुना था, उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work. ये कहा सर आपने? And contact. I had contact with you there. So, well, a lighter moment there then, but let's go across the other big story, and that's India's Operation Dost through help in Turkey and in sending supplies to Syria. So, India's Dost diplomacy, which is sending in the army medical teams, it's sending in national disaster relief fund commandos to help in removing equipment where people are still trapped, to remove that rubble, and also medical supplies, ECG machines, all being sent to Turkey and Syria by India. More relief material, a mobile hospital and specialized search and rescue teams from India are on the ground in Turkey, helping the country in the wake of the devastating earthquakes. India has sent over 100 NDRF personnel for search and rescue efforts, Indian Army medical teams, a mobile hospital with a 30-bed facility, along with other medical equipment as well as dog squads. For Syria, India has sent 3 truckloads of protective gear, along with emergency medical equipment and medicines. What MEA has done meanwhile is that we have deployed 2 Turkish-speaking officers from overseas who flew into Turkey and are now stationed there. With our aircrafts, we also deployed 4 MEA personnel to coordinate and help the process and the operation to coordinate between the Turkish authorities and our teams. Khalsa aid teams have also been dispatched from the United Kingdom and Iraq to help provide food as well as water. We will be setting up our aid
which will be we will set up a kitchen, we will be serving hot meals, also distributing blankets and whatever necessary there to help these people who are affected by the earthquake. The death toll from Monday's catastrophic earthquakes have surged above 11,200. The numbers are expected to continue to increase as more rubble is excavated. This as violent aftershocks rumble on in some parts of Turkey. Shops are closed, there is no heat because gas lines have been cut to avoid explosions, and finding petrol is tough. While anger is mounting in Turkey and Syria over what was described as a slow and inadequate response by authorities, some extraordinary survival tales have also emerged. A 7-year-old Syrian girl was seen shielding her younger brother's head under the rubble. Fortunately, this brother-sister duo made it out safely after being stuck for about 17 hours. A young girl was also rescued from rubble in Turkey's Adıyaman after being buried for 47 hours. Extended family members pulled a newborn baby alive from the rubble of a home in northern Syria after finding her still tied by her umbilical cord to her mother. This infant is the sole survivor of her immediate family, the rest of whom were all killed. India's massive assistance to Turkey is being seen as a move that could reset the trajectory of ties between both countries. Turkey's president has been critical on Kashmir in the past, and Turkey has close military ties with Pakistan, but New Delhi's present outreach and a tempering of Turkish rhetoric on Kashmir at the last UN General Assembly session could indicate a return to what was once an extremely close friendship between the two nations. Parmeshwar Bava for NDTV. In the other big news, well, the RBI has announced another hike in interest rates. What does that mean for you and EMIs? Also, the RBI is hoping that inflation will stay at around the 5% mark and predicted growth of over 6%. Richa Srivastav, a homemaker in Noida, worried about her loan EMIs going up as the Reserve Bank of India announced its 6th straight interest rate hike to control inflation, taking rates to the highest level since 2018. अभी तक कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे थे आप? अभी तक हम जो इंटरेस्ट रेट दे रहे थे उसमें हमारा जो हम आपको इतना बता सकते हैं वो मेरे हस्बैंड देखते हैं, मैं आपको ये बता सकते हैं कि जो ऑल टुगेदर जो हम दे रहे थे उसमें से 1,000 रुपए और 2,000 रुपए के नियर बाय हमारा बढ़ा हुआ है पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ। The latest rate hike adds to already rising loan and deposit rates as the Reserve Bank has hiked interest rates by 250 basis points in 1 year. Though the pace of the hikes is falling since December, the RBI governor signalled that rate cuts might not happen soon. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Repo rate is the interest rate that the Reserve Bank charges commercial banks when it lends them money. So when this rate is hiked, banks will increase their lending and deposit rates by a similar percentage. For example, for a 50 lakh SBI home loan of 20 years, currently the interest rate is 8.6%. But that is now set to go up to 8.85% with a 25 basis point rate hike. Now this will increase the total interest that you pay from 54.9 lakh rupees to 56.8 lakh rupees. So you'll have to pay almost 2 lakh rupees more as interest for that loan. Now your EMI will also go up by around 800 rupees. But the good news is that with this hike, the interest rate that you get on certain term fixed deposits is set to go up by around 0.25 percentage points as well. Though with inflation being within RBI's 6% target for the last 2 months, experts predict a halt in the rate hikes. It does appear that we can be prepared for a fairly prolonged pause before any further action is taken. And I think that's what the commentary also does, indicates that the RBI, though happy with the fact that inflation has come down, is still looking at a number of 5.3% for next year. RBI also cut the current year's inflation forecast to 6.5% from 6.7%, though highlighting that core inflation remains sticky.
The RBI governor called the Indian economy resilient, predicting a 6.4% GDP growth rate for the financial year 2024. In another step to make UPI international, the Reserve Bank has extended UPI for inbound travellers to India. Travellers from G20 countries will be permitted to make merchant payments with UPI. The Reserve Bank's announcements reaffirm that inflation is likely to continue falling for the coming few months. So while loans get expensive, the rate hikes aim to bring some relief from inflation. In New Delhi with Saurabh Shukla, Priyanshi Sharma for NDTV. And the markets gave a thumbs up to the RBI policy announced today in line with expectations. The markets gained and the rupee strengthened. The Sensex gained 377 points. The Nifty gained 150 points. Metal shares gained the most today, with the rupee strengthening also by 21 paise, ending at 82 rupees 49 paise to the dollar. And in other news, shares of Adani Group firms traded higher for the second session, with stocks of over 5 companies logging in gains against the backdrop of the decision to prepay $1.1 billion of loans on shares. Adani Enterprises today gained over 23%. Some Adani shares extended gains, but others ended in the red.